स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। आज हम काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोथ फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं हम। व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या चीज है? A body thrown into air with some initial velocity and then allowed to move under the effect of gravity alone is known as a projectile. So what is a projectile? जैसा कि आपको दिख रहा होगा जूम करके यहाँ पे, a body thrown into air with some initial velocity and then allowed to move under the effect of gravity alone is known as a projectile. जब भी हम किसी बॉडी को एयर में फेंकते हैं, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके हम जब उसको एयर में फेंकते हैं, तो वो बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करती है, यानी वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है बाद में। तो ऐसे बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं एंड सच अ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल में अगर आपको दे दूं तो एक फेमस एग्जांपल है, when a football is kicked by a football player, it goes into the air, covers some vertical distances and some horizontal distance, then finally strikes the ground. और भी एक एग्जांपल है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बैग को फ्लाइंग एरोप्लेन से ड्रॉप करेंगे, जो उस बैग की मोशन रहती है या उस बैग की जर्नी रहती है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। मैं यहाँ पे इन एग्जांपल्स को लिखता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, a football kicked by a football player into air in any direction। यानी जब भी एक फुटबॉल प्लेयर को एक फुटबॉल को किक करता है एयर में किसी भी डायरेक्शन में, तो फुटबॉल की जो मोशन होती है, फुटबॉल की जो जर्नी होती है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे जो मैंने अभी आपको यहां पे बताई, a bag dropped from a flying aeroplane, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एग्जांपल है। अगर हम एक बैग को फ्लाइंग एरोप्लेन से ड्रॉप करेंगे तो उस बैग की जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर थर्ड, ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स में हमने बहुत बार देखा होगा एथलीट्स को, जब वो एक जेवलिन को या एक हैमर को थ्रो करते हैं, तो उस हैमर या जेवलिन की जो जर्नी रहती है, उसकी मोशन जो रहती है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। ए जेवलिन or a hammer thrown by an athlete। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल है, a bullet fired from a gun। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगी फ्रॉम डे टू डे लाइफ। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन की मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, इसको हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, मैथमेटिकल एनालिसिस।
लेट्स कंसिडर एन XY प्लेन. एक XY प्लेन को हम कंसिडर करते हैं. XY प्लेन. Let O be the origin of this plane from which a projectile with some initial velocity u is to be launched, such that the initial velocity u makes an angle theta with the horizontal. यानी जो ये O है, सपोज यहां से हम किसी प्रोजेक्टाइल को, लेट अस से फुटबॉल, उसको प्रोजेक्ट करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे बाय गिविंग इट सम इनिशियल वेलोसिटी u, such that initial velocity u makes an angle theta with the horizontal. तो हमने बेटा आपको भी बताया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसमें एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करता है. तो आपने देखा होगा एक फुटबॉल की जो पाथ होती है, एक फुटबॉल की ट्रेजेक्टरी जो होती है, जब उसको एक फुटबॉल प्लेयर किक करता है तो वो कुछ इस तरह की रहती है. ठीक बेटा. तो ये जो ये u है, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी टू given to a projectile from the point of projection. Now if we resolve this u into two components, one of its component is u cos of theta along the horizontal. So what is this? It is u cos of theta. It is the component of this initial velocity along the horizontal direction. इसका दूसरा component, vertical component जो होगा, that will be it will be u sin of theta. Okay, it is u sin of theta. यानी हमने किसी प्रोजेक्टाइल को पॉइंट O से लॉन्च किया by giving some initial velocity u, such that initial velocity makes an angle theta with the horizontal. On resolving this initial velocity u into its components, we have one component u cos of theta along the horizontal direction and another component u sin of theta along the vertical direction. Due to this horizontal component u cos of theta, the projectile covers some horizontal distance, and due to this vertical component u sin of theta, projectile covers the vertical distance. यानी हमने देखा कि जो ये projectile motion है, it is a two dimensional motion. यहाँ पे दो dimensions involve होते हैं. यानी अगर हमें किसी भी point पे एक ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की, प्रोजेक्टाइल की पोजीशन मेजर करनी हो, तो उसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है. सपोज एट एनी टाइम द प्रोजेक्टाइल इज एट point P, such that it has the coordinates x and y. It has the coordinates x and y. Y is the vertical distance covered at any time t, and x is the horizontal distance covered. We will show that this trajectory or this path, it is a parabola. First of all, आप वीडियो को पास करके ये यहाँ पे कॉपी कीजिए. ओके, चलो ठीक है, कर लिया कॉपी. अब हम इसको इरेज करते हैं. हम देखेंगे कि ये जो पाथ है, मैथमेटिकली हम इसको शो करेंगे. इट इज अ पैराबोलिक पाथ. ओके, शाबाश. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे दो तरह की मोशंस है. वन इज द हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अनदर इज द वर्टिकल मोशन. ये जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u cos of theta, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. u cos of theta यानी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट remains constant. But there is an assumption: if ear resistance is neglected, if we neglect the resistance of ear, then this u cos of theta is going to remain constant. So we can say that along the horizontal direction, there is the projectile moves with uniform velocity. So the horizontal component remains constant if ear resistance is neglected. But what about the vertical component of the velocity? U sin of theta, it is the vertical component. What about it? Vertical component changes continuously. It changes continuously and uniformly. Why? Because this component is under the action of the gravity. Vertical component changes continuously and uniformly under the action of gravity. तो बेटा हमने देखा कि ये जो प्रोजेक्टाइल होता है, it is a combined effect of two different types of motions.
One is the horizontal motion and another is the vertical motion. The horizontal component of the velocity is going to remain constant if we neglect the air resistance, but the vertical component of the velocity, that is u sine theta, goes on changing continuously because of the gravitational pull of the earth. When the projectile is launched from this point, what happens? This vertical velocity u sine of theta, it goes on decreasing. It goes on decreasing till it reaches the highest point where this vertical velocity becomes zero. Where this vertical velocity becomes zero. यानी जब भी हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इस इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करने के बाद हम देखते हैं इसका एक कंपोनेंट होता है u cos ऑफ थीटा और दूसरा कंपोनेंट होता है u sin ऑफ थीटा. u cos ऑफ थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, it is the constant, and u sin of theta is the vertical component. It is going to change because this vertical component is under the action of the gravity. जहां पे हमने इसको लॉन्च किया यहाँ पे वैल्यू था u sin of theta. जब ये ऊपर जा रहा है तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है. जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा प्रोजेक्टाइल तो उस टाइम वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी. बाद में फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहां से अगर हम यहां देखेंगे सो इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. अब यहाँ ग्रेविटी की ओर आ रहा है, इसको ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है यहाँ पे. तो यहां से लेकर यहां तक जो वर्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, दिस मोशन, दिस वर्टिकल मोशन, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यानी यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन चेंज किस तरह हो रही है? यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फिर यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज होते होते यहाँ पे फिर वापस वही वैल्यू होता है जिससे हमने इसको लॉन्च किया था. अब आइए बेटा देखते हैं कि पाथ क्या है इस प्रोजेक्टाइल की. हम इन दोनों मोशंस को अलग अलग से पढ़ेंगे. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड अदर इज वर्टिकल मोशन. अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमने देखा काइनेमेटिक्स में हमारे पास एक इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. s इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, s is the displacement covered. हमने horizontal motion में देखनी है. At any time t, suppose at any time t the particle is at point p such that it has covered horizontal distance x and it has covered vertical distance y. So instead of s we will write horizontal distance. It is the distance displacement. We will write here horizontal displacement, that is x at any time t. U is the initial velocity. What is the initial horizontal velocity? It is u cos of theta. It is u cos of theta plus 1 half of, what is a? A is the, instead of a we will write here ax. Ax is the horizontal acceleration t square. Since horizontal velocity is constant, which means that there is no horizontal acceleration, therefore horizontal displacement x is equal to u cos of theta, u cos of theta into t. So x equals to u cos of theta into t, which implies अगर हम t को यहाँ पे देखेंगे तो t किसके बराबर आएगा? t is equal to x divided by u cos of theta. Call it equation number first. Okay, वीडियो को पास करके आप देख सकते हो पहले. अब आइए बेटा देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल मोशन. वर्टिकल मोशन देखेंगे अभी हम. वर्टिकल मोशन तो वर्टिकल मोशन के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर क्या बनेगा हमारा? s के बदले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज y. ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है अलोंग वर्टिकल? इट इज u sin of theta. u sin of theta at time t is t plus 1 half of acceleration क्या है वर्टिकल की ओर? ay. एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज माइनस g, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन ले रहे हैं ना, g डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है. इट्स 1 half of माइनस g t स्क्वायर. y इक्वल्स टू u sin of theta t minus 1 by 2 gt square. Now call this equation second. Substituting equation first into equation second, we get
y equals to u sin theta, t के बदले it is x divided by u cos of theta minus 1 by 2 g t square के बदले it is x divided by u cos theta का square. Okay, so on rearranging we get it is u sin upon u cancel out, it is sin upon cos, that is tan theta, rather x tan theta, sin by cos, that is tan x tan theta minus after rearranging we will get here it is g divided by twice u square cos square theta into x square. Call it equation number third. Now if we compare equation number third with the standard equation of parabola, that is y equals to ax minus bx square. This is the standard equation of parabola. We will get here that this a corresponds to tan theta, a equals to tan theta, which is a constant here, minus here, and b is equal to g divided by twice u square cos square theta. So from equation third it is clear that path followed by a projectile is a parabola. I will write here from equation third it's clear that path followed by a projectile is a parabola. ठीक बेटा, तो क्या पता चला हमें यहां से, हमने जो यहां पे दिखा ये पाथ जो है ना, ये पैराबोला की पाथ है, ये पैराबोला है। जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में दिखाया, अगर हमने इक्वेशन थ्री को कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो हमें मिला ये a किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर, और b किसके बराबर है, g डिवाइड बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी दोनों कांस्टेंट है। तो इक्वेशन थर्ड जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की है। अब हम कुछ पैरामीटर्स देखेंगे यहाँ पे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। पहले आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक। Now we are going to discuss three important parameters of projectile motion. There are three important parameters of projectile motion which are very, very important. Number first is time of flight. What is the time of flight? सबसे पहले हम ये पैरामीटर डिस्कस करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट एक प्रोजेक्टाइल का क्या होता है? सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि एक प्रोजेक्टाइल, आई विल राइट हियर द टाइम फॉर विच a projectile remains in air is called time of flight. एक प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। द टाइम फॉर विच a projectile remains in air is called time of flight. यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक कितनी देर ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, कितनी देर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में रहा, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट देखना हो तो हम इसको वर्टिकल मोशन की इक्वेशन से डिराइव करेंगे। फॉर वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? अभी हमने जो डिराइव की थी, y equals to
वर्टिकल मोशन के लिए फिर से डिराइव करेंगे इसको, y इक्वल्स टू was ut plus half of minus gt स्क्वायर, और y इक्वल्स टू u के बदले हमारा था यहाँ पे u sin of theta t minus 1/2 gt स्क्वायर. It is the displacement relation for vertical motion. Okay. तो हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है. टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लेता है, ये यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लेता है. तो हम कहेंगे व्हेन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरेशन in case of vertical motion when the object is at point B at any time small t, but when small t is equal to capital T, that is the time of flight. What is the vertical distance covered? It is the vertical distance here when time covered is small t, but when time covered is capital T, means here what is the vertical distance? Vertical distance again is 0. Here vertical distance was 0, vertical distance is y. Here time is t. When the particle has reached there, it is time of flight. Here the time taken by this projectile in going from point of projection to point of landing is called time of flight. So when t is equal to capital T, that is time of flight, that time the vertical displacement is again 0. Therefore we will write, instead of y we will put here 0 is equal to u sin of theta t minus 1/2 gt square, minus 1/2 gt square.